Hello and hello and a very good evening to all of you. It's just the 5 o'clock on a Saturday evening, and as every other day of the week, Monday to Saturday, I am here live on this Facebook page of SKD University with yet another session of soft skills communication, spoken English development. And just in case there is someone who's a new joinee today, let me tell you, I am Parmita Dhar, a soft skills and communication trainer, all the way from Kolkata, streaming live on the Facebook page of SKT University, Hanumangarh, Rajasthan. I can see so many people have already joined. I'm very happy to see that people are joining before time and they are actually leaving their messages so that I can also come to know that how many of them have joined. Well, that's a wonderful gesture from all of you. No, it's a participation सर्टिफिकेट गगनदीप शायद गगनदीप का क्वेश्चन है ये कि एग्जाम शायद नहीं होगा इट्स अ participation certificate. It's not an exam oriented one, but I will be able to tell you once I speak to my sources in the university. I'll speak to the respected teachers whom I am in touch with, and I will let you know. But don't worry, it's not about an exam, it's about the learning process. You enjoy the process, that is more important. Okay, so I have Mamta, I have Pooja, I have Gagandeep, and then I have Priyanka, Monica. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Gagan Pawar, namaste. How are you, ma'am? I'm great. Thank you so much. Monica Vishnoy saying good evening, ma'am. Mansi Chabra, good evening. Aliza, hi, Aliza. Hello, Kavita. How are you? How are you? So we have people from various parts of the uh, country, some from Rajasthan, some like me from the eastern part of the country. Gurcharan. Hello, Gurcharan. Good to see you today. I think nice peak. What nice peak are you seeing, by the way? Anyway, please let us keep ourselves actually focused to the reason why we have come here today on this Facebook Live page of SKT University. Ma'am, what we will do today, we will do two very, very important things today. One is how to introduce yourself, that is self introduction. You know why? Because this is a very important area. This is a very important question which is being asked to us whenever we go for any admission for any higher education, whenever we go for a job, whenever we meet a new person, we need to introduce ourselves, right? So I will be doing a session today on self introduction, which in my career I have found that it is the most common and the trickiest question, right? So we will do that today, and we will also learn how to converse, how to speak in a situation. You know, from morning till night, we come across in our professional and in our personal life, we come across a lot of situations where we need to communicate, right? In the morning, we wake up, and the first communication we do is we communicate with ourselves. That is intrapersonal communication. Then we communicate with our parents. Kabhi kabhi we have a off mood, right? And when we go to the college or when we go to our workplace, we do not communicate well, and the impact is very very important here कि मूड तो मेरा ऑफ है लेकिन मैंने किसी और के साथ ठीक तरह से कन्वर्सेशन नहीं किया है,
तो क्या होगा? तो what is the concept of situational conversation? We will discuss that as well. So today's session, my dear boys and girls. Hi, Himanshi. Today's session is more about soft skills, less about spoken English. But even soft skills cannot be complete without proper English speaking. So we have to keep that in mind, that how are we going to speak to people? So, how do you start a conversation with a person whom you know, or with a person whom you do not know? Hi Suhavna, hi Vanita, hello Manisha. So, suppose you meet me for the first time. Hello Dravid, how are you? You meet me for the first time. What is the way, or how would you start a conversation? You go to a party, घर पे किसी की शादी हो रही है. You go to a party, you meet lot of new people. How do you start a conversation? You are waiting for in a queue for a university form, though everything is online now, but I think the pandemic would be over soon and we will again get into the physical mode. Yes, Ravid, I'm quite well. Thank you so much for your concern. So we will soon again move on to the physical mode. So you're standing in a queue, and it's been quite some time, and you need to ask something to someone. How are you going to do that? How are you going to do that? So how to start a conversation is very important. So we say hi, hello. What is that hi, hello? Why do we start a conversation with hi, hello, ya फिर namaste? In Indian culture, we do that with namaste. Why do we do that? Why do we do that? Because this namaste is an initiator. It is a greeting in the first place. Hello is a greeting, giving respect. Right? Absolutely, Monica. Thank you so much for this. It is a greeting. Like, Devilal Verma, he's saying that good afternoon, ma'am. So, good afternoon, ma'am, is what? It is opening a dialogue, right? A dialogue open kar raha hai, right? To give respect. Exactly, Monica. Right? At the same time, it is initiating a process. कोई भी प्रोसेस शुरू करने से के लिए उसको इनिशिएट उसको चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So these greetings are the initiators. So you need to greet. कहीं पे भी जाके किसी को ऐसे ही आप नहीं पूछ सकते क्यों भाई क्या चल रहा है ना. ना ऐसे नहीं चल रहा है. लाइक ये देखिए अभी कमेंट बॉक्स में देवीलाल ही इज शोइंग दिस. So yes, this is very important, very, very important, right? This is very, very important. Okay. So in that case, what we need to do, we need to initiate the process of communication, and that we do with a greeting, whether it is a oral communication or it is a written communication. It is a oral communication or it is a written communication. We always have to start with a greeting. Hello, Anita. Good evening, ma'am. See, everyone coming in this comment box and just telling that, okay, I am there, is doing it with a greeting. Why? That opens up the block, that opens up the communication block, which is very important. This is practical tip number one. Practical tip number one. Okay, Pavan Jinagal. Hi, Pavan. How are you? Right? Number two. What is number two that we have to keep in mind? What is number two that we have to keep in mind? We have to, hi, Iftikhar, how are you? Number two thing, what we have to keep in mind, that is, we have to be patient to start a conversation.
we have to be patient to start a conversation. गुरचरण, ये सब क्या है बेटा? किताब और पेन के जो इमोजीज आप मुझे भेज रहे हो, you क्यों भेज रहे हो? Right? So what is that? You have to patient because of what? धैर्य रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. धैर्य किस लिए? For what reason? To understand the environment. माहौल को समझने के लिए. To understand the environment and to understand the situation. To give yourself time to have a kind of evaluation that how things are like. What is the mood of the environment? That is what we need to understand before we start a conversation. So when you go to the teacher's room in your college, to the professor's room in your college, you just do not, get inside and start talking. You take permission, when you go inside and then you greet your teachers and then you start talking. Yes or no? Tell me. Right? So why do we do so? Why do we do so? We do so because we again give ourselves some time to start the conversation, and we also give the other person with whom we are going to start the conversation some more time. थोड़ा सा ट्यूनिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये कन्वर्सेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ब्रीदिंग एरिया रखें. ओके? Am I clear to all of you? This is number one. Number two, I'll give you a situation, because I said it is a situational conversation. And I would like all of you to write in the comment box so that I can come to know from you all. And I can also understand like how things are going on, right? Or it is a written communication. Right. So we can understand that, right? So in that case, let me give you an example. Suppose you have got a examination paper, right? You have got your English examination paper, perhaps, which is being evaluated by me. And I have done the evaluation, and while doing the evaluation, what I have done, I have not given marks to you in the last question. So you got 35 out of 40, but if I give marks to you in the last question, which is of 5 marks, maybe 3, 4, whatever you get, your total marks will increase. Right? So in that case, you have to start a conversation with me. I am physically present in your college, and you have to start a conversation with me. So how are you going to do it? You are very annoyed. What is this? Ma'am ne to last question dekha hi nahi. Right? This is situation one. Situation two is your mother is very annoyed with you कि आप लोग ठीक से देखते नहीं हो, आपने अच्छा एग्जाम नहीं दिया, आपको तो 40 में 40 मिलना चाहिए था, आपको 35 मिल गया. तो यू आर ऑल्सो वेरी स्केयर्ड कि क्या होगा, मैम को जाके बोलेंगे अगर 2 मार्क्स बढ़ जाता है तो ठीक है, मदर विल बी सेटिस्फाइड, अगर नहीं बढ़ता है तो फिर से झमेला. तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज योर mindset. How are you going to start the conversation? How are you going to start the conversation? Please tell me. Just the beginning, not anything else. How are you going to do it? Anyone, please. You have to think that it is a situation where if you get the marks, you will be benefited. If you do not get the marks, you will be very annoyed because कुछ लिखा है, कुछ marks तो मुझे मिलना ही चाहिए था. That is your logic. And more importantly, you just want to make sure to the teacher who did not give you the marks
दैट कि गलती आपसे भी होती है, आप हमेशा हम लोगों को ही बोलते हो कि गलती करते हो, ये करते हो, वो करते हो, दिस दैट एंड द अदर. So this is the situation. I'm giving you a complete situation and you have to tell me how are you going to start the conversation. Hurry up. चलो जल्दी 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 मुझे बताओ in the comment box. First two lines of the opening dialogue. Tell me the first two lines of the opening dialogue. Anita, hello. Good evening, ma'am. Manisha, Manu, ठीक है. लेकिन मुझे मैंने जो सिचुएशन आपको दिया है, आप प्लीज मुझे उसका फर्स्ट दो ओपनिंग सेंटेंस जिससे आप कन्वर्सेशन शुरू करेंगे वो बताएं जल्दी से. Manisha Manu, MSc Agronomy, very good, but I need the answer of the situation I am talking about. Yes, you're going to speak to me. Yes, Gagandi. Yes, so you seek the permission of entering. Yes, Monica Vishnu, absolutely, bang on. So the first thing, you will knock and you will seek a permission. Why is it that important? Why is it that important? That is important because you are making the other person alert about his or her environment also. Maybe वो आराम से बैठ के चेयर के ऊपर पैर उठा के बैठे चाय पी रहे हो because that is an off time for that person, और आप वहां पे जाते हो एक ऑफिशियल काम के लिए, right? So you need to make the person alert. Absolutely. So you seek the permission, right? Monica Vishnu, absolutely right. Then we greet them. Yes. Good evening, ma'am. May I come in? Ma'am, please excuse me. I want to talk to you about my yesterday's test marks. Wow, wow, wow. Kavita, very good, very good. Yes, yes. What is your tone in this kind of a conversation? Both Monica and Kavita are absolutely right. They're bang on the point. I want to make clear to all of you in this session of the Soft Skills Spoken English session organized by SKD University, absolutely free for all the students community. But the thing is, I'm very happy that you people are actually, picking up things like anything which I'm trying to convey to you. So in that case, Lakhvinder Kaur, namaste beta, good to see you in the session. What would be your tone? Your tone would be very empathetic. Isn't it, Kavita? Isn't it, Vishnu, Monica Vishnoi? Is it? Manish Kumar, welcome to the session. Yes? Isn't it that your tone would be absolutely empathetic? That is understanding, careful, appreciative in nature? Yes or no? Tell me. May I come in, ma'am? Good evening, ma'am. Absolutely, Gagandi. Very good, my dear. Right. Namaste, ma'am ji. Sadhvir Kaur Sidhu. Namaste, Sadhvir. Kaise ho aap? Right. So we start with a very polite greeting. Why? In a conversation, we have to keep one thing in mind: the person with whom I am conversing, my relationship with that person. So when that person is a teacher, शिक्षक का मान बहुत ऊपर हम लोग रखते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, तो उसको हम काफी रिस्पेक्ट से डील करेंगे. बट सेइंग सो, इट इज नॉट दैट शिक्षक को रिस्पेक्ट देंगे और जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे घर में मेरे मम्मी को हेल्प करने के लिए आते हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगी. नो, respect is a way of life. When I can give respect to people, I also get respect from them, right? Okay, Manisha Manu, what is she saying?
She's saying that, may I come in, ma'am? Yes, absolutely. You all are absolutely correct. Correct. And then I'm great, Sadhvir. I'm great. Thank you so much. So the next thing that we need to do is, like, we need to give, in certain situations, we need to give a compliment. We need to give a compliment. Am I clear? So, ma'am, thank you so much for the copy that you have given us yesterday. Um, I will just, I was just going through it, and I have found one area I would like to speak to you about that. I'd like to speak to you about that. Okay. Hello. Right, so that is a very important way of starting a communication, acknowledging the fact that somebody has done something for you, and you are thankful for that. जो ये जो सिचुएशन है, इस पे आपको थैंकफुल होने का स्कोप है. नॉट एवरी सिचुएशन वी आर एक्चुअली थैंकफुल. Not in every situation we are actually thankful, right? So if we get an opportunity to pay a compliment, we should never miss that. So लेकिन ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अगर आप दोगे ना, तो वो थोड़ा फ्लैटरिंग टाइप हो जाएगा, थोड़ा मस्का टाइप हो जाएगा. उतना भी नहीं देना है आप लोगों को, लेकिन acknowledgement is necessary. Ma'am, thank you for the corrected copies yesterday. There I have a question. Can I just take 2 minutes of yours? Why? Because you're speaking to your teacher, right? When you're speaking, suppose you want to go to, you have bought a jacket from a retail store, and you ask them about the quality and everything, and they give you a huge certificate about that, राइट right? कि बहुत अच्छा है, लेके जाइए, इसमें ये है, वो है, हैन है, तैन है, ऐसे करके वो बहुत सारा आपको गारंटी देते हैं, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स देते हैं. फिर आप घर लाके देखते हैं कि वो अंदर से पूरा घिसा हुआ है, फटा हुआ है. आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप फोन उठाते हैं, उसको अपना कैश मेमो निकालते हैं और फोन उठाते हैं. तब क्या आप कॉम्प्लीमेंट देंगे? अब कंप्लेन करने के लिए कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं. यू आर स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन टू कंप्लेन, राइट? तो तब क्या आप कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आपके शॉप में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा? वुड यू डू एनीथिंग लाइक दैट? बोलो ना. टेल मी, वुड यू गिव अ कॉम्प्लीमेंट देन? कि आपने कुछ खरीदा है एक रिटेल स्टोर से, एक बड़े से दुकान से, और उन्होंने कहा, आपने मान लो आपने एक जैकेट खरीदा है ठंड के लिए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप लेके जाइए, प्राइस भी एकदम सस्ता है, ये वो करके, जैसे सेल्स में होता है. लेकिन आप घर आके देखते हैं कि अंदर का जो लाइनिंग है या फिर जो कपड़ा है वो एकदम घिसा हुआ है, फटा हुआ है. तो आपको बहुत गुस्सा आता है वो उस आदमी के ऊपर. आप उसको फोन लगाते हैं, कैश मेमो से नंबर देख के उसको फोन लगाते हैं और उससे बात करना चाहते हैं. तो तब क्या आप बहुत ही पोलाइटली उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि वो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ डिफेक्टिव आइटम? See, Kavita is saying no, absolutely not. Yes. So the tone, वहां पे पहले वाले में जब मैं टीचर से बात कर रही थी, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा we become a bit more empathetic. हम लोग थोड़ा empathetic होके बात करते हैं, है ना? लेकिन जब कभी हम लोग को बहुत गुस्सा आता है, तब हम लोगों के दिमाग में कहीं पे भी ये एम्पैथी नहीं रहती है. तभी हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग
अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव का हिंदी क्या है मुझे नहीं मालूम, मतलब बहुत गुस्से से बात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये गुस्से से बात करना इज नॉट अ वेरी राइट थिंग। आप अपना गुस्सा बहुत ठंडे दिमाग से किसी और को समझा सकते हो। इसके लिए उग्र होके, अग्रेसिव होके चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। नो नीड ऑफ डूइंग इट, right? So whenever you start a conversation, never shout at the person even when you are very angry, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे तो वो भी चिल्लाएगा। और your intention is not to shout at people. Your intention is not to shout at people. What is your intention? Your intention is to get your work done. है कि नहीं? आपको एक जैकेट उसने बेचा जो कि अंदर से फटा हुआ है, घिसा हुआ है। क्या आपका इंटेंशन ये है कि उस आदमी को जाके मारे या उस आदमी को जाके बहुत डांटे? नहीं। आपका इंटेंशन ये है कि मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने पैसा दिया, मुझे ये चीज मिला, भाई मुझे कोई कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस ये चेंज करके एक प्रॉपर सा दे दो या फिर मेरा पैसा वापस कर दो। आपके साथ उस आदमी का कोई पर्सनल खुन्नस तो है नहीं। यू हैव नो पर्सनल प्रॉब्लम विद दैट पर्सन, isn't it? So that is why we need to keep this in mind, right? You can be aggressive, but you cannot shout at a person. You should not. हम लोग कभी कभी गुस्से में कर लेते हैं, कभी कभी गुस्से में हो जाता है। महबूब खान नमस्ते। आप शायद थोड़ा लेट पे ज्वाइन किए, बट नेवर माइंड, बेटर लेट देन नेवर, राइट? सो this is very important to keep in mind. You keep that in mind, right? क्योंकि आपको अपना काम निकलवाना है। बिजनेस कम्युनिकेशन में जब हम लोग बिजनेस के लिए कोई प्रोफेशनल डील के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि काम होना चाहिए। चिल्ला के, झगड़ा करके, ये करके, वो करके, फ्लैटरिंग करके, मस्का लगा के कोई फायदा नहीं, जब तक मेरा काम सही तरीके से सही समय पे न हो जाए। Am I clear to all of you? I think I am. अच्छा, तो आप लोगों ने क्या लिखा? नो मैम, नो मैम, नो मैम। इतना सारा नो मैम क्यों है? अच्छा, कविता, राइट, ओके, ग्रेट, right? You sometimes you start a conversation with an opinion. You seek an opinion. किसी से पूछते हो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, राइट? जैसे कि अभी वैक्सीनेशन का ड्राइव हो रहा है। आप लोगों ने वैक्सीन शायद किसी ने लिया होगा, दोज हु आर अबव 18, दोज हु आर बिलो 18। अभी आप लोगों का वैक्सीनेशन हुआ नहीं। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची वैक्सीन लेने गए, कहीं कहीं पे लाइन हो रहा है, कहीं कहीं पे चिल्ला मिल्ली हो रहा है, कहीं पे मारपीट भी हो रही है। वैक्सीन है या नहीं है, ये सब लेके तो आप जाके पूछते हैं कि भैया जी क्या यहाँ पे वैक्सीन का लाइन है? सो व्हाट आर यू डूइंग? You don't know the person, but you are starting a communication with a person who is unknown to you. When you are doing it, you ask a question, and when you ask a question, that means you are giving value to the person. क्या मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को? एक बात बताइए मुझे, एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, और मतलब एकदम 30 सेकंड के अंदर आंसर लिखिए। ऐसा कोई है आपके आसपास, आपके टीचर्स, आपके मित्र, आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या कोई भी, जिसका कन्वर्सेशन स्टाइल, जिसके बात करने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है? कोई भी maybe some from your relatives, from the extended family, some teacher, ऐसा कोई है जिसका बात करने का तरीका, जैसे वो वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे उनका मतलब पूरा पैकेज एक साथ,
जिनके बात करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है या आपको बहुत इंस्पायरिंग लगता है? कोई है ऐसा? ओके, सो शी इज सेइंग माय ग्रैंडमदर, वेरी गुड। ओके, चलो जल्दी जल्दी लिखो, 30 सेकंड में लिखो आप लोग। वेरी गुड। ओके, ओके, राइट, ग्रेट ग्रेट। चलो, सो किसी को ग्रैंड मदर, किसी को टीचर, किसी को मदर, किसी को फादर। कैन यू आइडेंटिफाई वन क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन और वन फीचर ऑफ दैट पर्सन्स कन्वर्सेशनल स्टाइल, बात करने का तरीका, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे। एक एक फीचर बताइए मुझे जो आप लोगों को अच्छा लगे, या one feature that you people like. Science teacher, very good. Polite and clear speaking, absolutely, 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 very good. I'll come to your point. Why did I ask you this question? I'll explain that to you. जल्दी जल्दी से लिखिए प्लीज। लाइव स्ट्रीमिंग में इतना टाइम मैं नहीं दे सकती, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई नो यू पीपल नीड सम टाइम टू थिंक, बट देन इन अ लाइव स्ट्रीमिंग सेशन we actually cannot give so much of time. Clear and truth, okay, okay. Sushil Kumar, very good. Polite conversation, okay, okay. ग्रेट। तो एक चीज आप लोग देखिए विच इज मोस्टली कॉमन, टू थिंग्स आई एम गेटिंग कॉमन हियर। वन इज क्लैरिटी इन स्पीकिंग, जो भी बोल रहे हैं वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। यस अनीता ऑल्सो, राइट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, पोलाइट, दैट मीन्स जो अच्छे से बात करे, उनसे उनका बात सबको अच्छा लगता है। तो अगर मुझे ये अच्छा लगे कि कोई मेरे से क्लियरली बात करे, कोई मेरे से पोलाइटली बात करे, तो मुझे भी तो वो करना होगा। आई विल ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। यस और नो? Yes or no? So in that case what happens? In that case you have to be polite and clear कि मुझे क्या बात करना है। क्लैरिटी तभी आएगी जब हम लोग का सोच क्लियर होगा। Clarity in conversation will only come when we will be able to think clearly and we have proper language support. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी इन थिंकिंग एंड प्रॉपर लैंग्वेज सपोर्ट। सिंपल सा चीज है, जस्ट यू ऑल हैव टू पुट इट इन योर in the hard disk of your brain and get it sorted forever in your life. So what I was saying that आप वैक्सीन के लाइन पे खड़े हैं और आपको पता नहीं यहाँ पे कब से शुरू होगा, तो आप जाके किसी से पूछते हैं, अंकल जी ये कब शुरू होगा, इसके लिए क्या करना होगा। So when you start that with a salutation, with a kind of a you don't just go and ask कि ये कब शुरू होगा, ऐसे भी हम लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है एकदम क्या मैं पूछना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम हम लोग पूछ सकते हैं कि अंकल या भैया या सर या मैडम, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन इज इट गोइंग टू स्टार्ट। यू नो द इम्पैक्ट, उसका जो असर है, इट टर्न्स लाइक दिस, तुरंत चेंज हो जाता है। क्यों? क्यों? बिकॉज एवरीबडी लाइक यू ऑल likes someone who speaks politely, clearly. With polite speaking means what? You give respect to the other person, and that is the very, very important thing. Am I clear to all of you, my dear boys and girls? Another very important way of starting a communication is finding a common issue.
फाइंडिंग अ कॉमन इशू। आप ट्रेन पे घूमने जा रहे हो, आजकल तो ट्रेन में घूमने जाना मतलब कब होगा पता नहीं, लेकिन एक टाइम था हम लोग समर वेकेशंस पे, विंटर वेकेशंस पे वी यूज्ड टू टेक ट्रेन्स टू गो टू वेरियस प्लेसेस, और उस कंपार्टमेंट में आप एक दूसरे से बात करते थे। मैं तो करती थी सबसे बात कि कहाँ जाना है, कहाँ से है, ये है वो है। So you build a relationship with the unknown person, right? And even when you go to a new place to visit, right? कि मान लो आप कभी कश्मीर चले गए, कभी गुजरात चले गए, कभी तमिलनाडु चले गए, कभी असम चले गए घूमने के लिए, you speak to the local people, you speak to the tour guide, and how do you start? You start with a common thing, जैसे कि क्या ये ट्रेन ठीक राइट टाइम पे चल रही हो? So this is a common point of concern for everybody who is traveling in that train, particularly people who are around you in that particular compartment. तो किसी ने कहा नहीं शायद 10 मिनट लेट है, किसी ने कहा नहीं नहीं 10 मिनट लेट होने से क्या होगा, वो मेकअप कर लेगा। एज अ कम्युनिकेटर यू हैव टू बी एन इनिशिएटर ऑफ कन्वर्सेशन, है कि नहीं? है कि नहीं? अब मान लो इस क्लास का, इस सेशन का एक एग्जांपल देती हूँ। एवरी डे आई कम विथ अ कॉमन टॉपिक, राइट? कभी कभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे सेशन चाहिए, आप बताइए मुझे। क्यों? बिकॉज इट शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आपको भी उससे बेनिफिट मिले, आप सीख पाए, मुझे भी उससे बेनिफिट मिले, मैं सीख पाऊँ, है कि नहीं? Yes or no? Tell me. Right? That commonness is very important, where everybody feels connected. Everybody feels connected. A conversation will always be a good conversation, a successful conversation, when all the members present in that conversation process feels connected to each other. Clear? Clear? राइट? ये ध्यान में रखिए, ऐसा कुछ मत बोलिए जिसको मतलब जिससे लगे कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ये कुछ ऐसे बात बोल रहे जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आई नो नथिंग, सो आई विल नॉट स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। या फिर don't start a conversation don't start a conversation with a negative sentence, with a negative uh, frame of mind, because negativity doesn't attract people. लोगों को लगेगा कि अरे क्या फायदा, ऐसे ही इतना प्रॉब्लम है लाइफ में, और ऊपर से किसी और का प्रॉब्लम सुन के कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं। And at the same time, when somebody else is starting a conversation, then show genuine and positive interest. Some of the very common topics of conversation is weather, academic system, students के लिए एग्जाम कब है, राइट? और या फिर बारिश कब होगी, राइट? पैंडेमिक कब तक चलेगा, राइट? इन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, और ऐसे ही हम लोग कन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन के लिए मैंने जैसे कहा, आप लोगों को दो चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो चीज़, एक तो है कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि क्या आप बोलना चाहते हैं, यानी कि you keep a track of what you are going to say, right? And the second is language. किस भाषा में, जिस भी भाषा में आप बोले उस भाषा में क्लैरिटी हो, उस भाषा में आपका ज्ञान हो। But another thing which is very important is the right attitude. Don't just talk because you have nothing else to talk. वो ना एकदम बकवास होता है।
So the right attitude is also very, very important when you have to converse. When you have to converse. Am I clear to all of you? This is about situational conversation. तो आप जब किसी दुकान में जाते हैं ना, आपके लोकेलिटी की दुकान में मम्मी ने बोला आपको कि चलो थोड़ा चाय, थोड़ा चीनी, थोड़ा बिस्किट लेके आओ, वहां पे भी जाके एक दिन जो दुकानदार है ना जिनसे आप लोग सामान खरीदते हो, वहां पे जाके एक दिन उनसे एक ग्रीटिंग से शुरू करो कि कैसे है, सब कुशल मंगल, हाँ, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा कैन यू गिव मी ऑल दिस, ये दिस इज वन वे ऑफ स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन. एंड द अदर वन ऑफ स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन कि जाके कुछ बोला ही नहीं, एक लिस्ट थमा दिया कि भैया ये दे दो. That is also another way of conversation. दोनों में आपका काम होगा because the other person is sitting there to do business. वो देगा आपको सामान, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा कन्वर्सेशनल स्टाइल में थोड़ा पर्सनल होके बात करोगे ना, तो आपका सर्विस ज्यादा अच्छा होगा. So please keep that in mind. Please keep that in mind. So this is about situational conversation, which I wanted to deal with you today. This is, when we have an interactive session, we can actually give situations and two-person can do a role play and do things. But then, just to make you understand how things go, this is how it is being done. Now I will be sharing a presentation with you. But before that, let me give you the background of the presentation. This is a time many of you have just passed your class 12 and you will be going to college and you will be taking admission. Someone will take admission for post-graduation courses. Someone will go for job interviews, so on and so forth. And in all the interviews, कहीं पे भी जब आपसे लोग बात करेंगे, the first thing that will come is self-introduction. So trust me, my dear boys and girls, self-introduction is a very, very important thing, but a very, very difficult thing also. हम लोगों को लगता है कि मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं तो बता ही दूंगी, मुझे तो पता ही है मैंने क्या किया आज तक, क्या नहीं किया, और क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है. But the thing is, जब सच में बोलना होता है तो वी गेट स्टक अप कि क्या बोले क्या नहीं बोले, और कुछ बोल देते हैं इधर उधर की चीजें, और जो बोलना चाहिए जिससे हम लोग का इवैल्यूएशन प्रोसेस ठीक से होगा वो छूट जाता है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो व्हाट आर द मस्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन अ conversation. In a self-introduction process. Am I clear to all of you? Now I'm going to share my presentation. Okay. So today it has been shared absolutely fast. That's great. That's great. Now you see the must in self-introduction for a corporate profile. I'm sorry, perhaps ये मैं हटा ही देती हूँ because this is not something which is required for you at this level. So let it be this. The best self-introduction. Okay. To start with, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, काइंडली टेक अस थ्रू योर प्रोफाइल, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल अस समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड योर सीवी. The same answer with various types of questions. एक ही आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके केस में जब आप जाएंगे किसी से मिलने, कहीं पे इंटरव्यू देने, तो आपको क्या कौन सा पूछेंगे बोलो. तो मेरे दिमाग में जितने सारे आए थे, मैंने यहाँ पे एक 4 सेंटेंसेस का एक लिस्ट बना दिया है, ताकि आप लोग इससे it becomes easier for you to understand, right? The commonest and perhaps the trickiest questions. आपको ना इंटरव्यू में, यहाँ वहाँ, एग्जाम में, ओरल में,
वाइवा में, वाइवावॉसी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, which are some are easy, some are difficult, some are not so difficult, but ये सबसे difficult है, सबसे difficult नहीं है, rather tricky है, थोड़ा सा पेचीला है, right? So the 5 W's and 1 H of self introduction, let us understand कि ये क्यों पूछा जा रहा है मेरे से. Please introduce yourself. Gagandeep, can you please tell us something about yourself? Monica, can you please take us through your profile? Right? क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं, जिन जिन लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, they want to know that how far I am clear, to what extent I have clarity about myself. Because if I do not have clarity about myself, I will not have clarity about anything. अगर मैं अपने आप को ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, I will not be able to do others correctly as well. The next is, so we understand that it is an evaluation process. They want to see how we present ourselves to someone we do not know. Second is what to say. क्या बोले, क्या बोले. मैं तो बहुत कुछ हूँ. मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, मैं अपने टीचर्स की स्टूडेंट्स हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स की फ्रेंड हूँ. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीनेजर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम व्हाटएवर. सो क्या बोलना है, इतना सारा, आई एम 15 ईयर ओल्ड, आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड. सो इतने सारे लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो कौन सा मैं बोलूं और कौन सा मैं छोड़ दूं. Whom to address, 4 लोग बैठे हैं, किसके तरफ मैं देखूं, कहां से मैं शुरू करूं. कि I was born in 2001, I was born in 2005, वहां से, या फिर I am a school, I completed my school from such and such school in the year 2007 या 2020, whatever. कहां से मैं शुरू करूं, कहां पे जाके उसको मैं एंड करूं. क्योंकि जिन लोगों को अच्छे से बोलना आता है ना, वो लोग बस बोलते ही जाते हैं, राइट. तो कहां पे एंड करूं जाके वो शॉर्ट एंड सिंपल हो. इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल. जो अगला आदमी उसे सुन रहा है उसे अच्छा लगे सुनने में, वो बोर ना हो जाए, उसको नहीं लगे कि भाई खत्म करो अभी, या फिर उसको ये भी ना लगे कि ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, इससे थोड़ा आगे भी इनको बोलना चाहिए था. और ये जो पूरा सिचुएशन है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. So there's an easy tip, think out of the box. What do we mean by thinking out of the box? Thinking out of the box means think creatively. I always say one thing to all the students that I deal with in soft skills, that invest time on yourself. खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, खुद को लेके सोचो. Stand in front of the mirror and talk to yourself. Find out which style suits you, what kind of gesture and posture goes well with you. That is very, very important at this juncture of your life, rather not my life, because I have crossed that juncture of my life. Right? To think creatively, कैसे किया जा सकता है? How are we going to do that? So what are the 5 W's and 1 H? Why? That is, why is it asked? What to say? Whom to address or look at? Where to start from? Then when to end? खत्म कब करना है? ये मैं हमेशा बोलती हूँ, पता है. कम्युनिकेशन सिखाना, कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना किसी से is something a difficult job. जो लोग, those people who doesn't have a very good language base and all, उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन उससे भी डिफिकल्ट ये है कि उनको ये सिखाना कि भाई बहुत हो गया है, अभी आप रुक जाओ. So it's very difficult to make them learn where to finish, where to end, and how to deal with the situation. इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जा सकता है.
और इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज क्या है? स्ट्रैटेजीज है, कम टू द पॉइंट, नो बीटिंग अराउंड द बुश। इधर उधर की बातें करके खुद का टाइम, जो आपसे बात कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल सर हो, टीचर्स हो, फिर कोई कंपनी के लोग हो जिस जहाँ पे आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है, या कोई पैनल हो जहाँ पे आपने पीजी के लिए, अपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, उनका टाइम या खुद का टाइम वेस्ट न करके, बीटिंग अराउंड द बुश न करके, सीधा सीधा पॉइंट में आइए। कम टू द पॉइंट। व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज इट शोज योर फोकस। इससे पता चलता है कि आपका फोकस क्या है। अगर मैं यहाँ मतलब पॉइंट से आने से पहले घूम घूम के चक्कर लगा लगा के आऊं, तो द क्वेश्चन इज रेस्ड अबाउट माई फोकस। ओके, अबाउट माई फोकस। बी वेल प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। बी वेल प्रिपेयर्ड। बिना प्रिपरेशन का कुछ काम नहीं होता है, ट्रस्ट मी। मैं जब आपसे सेशन लेने बैठती हूँ, मैं उसके पहले पीपीटी बनाती हूँ, खुद से बात करती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे क्या एग्जाम्पल्स देना है, कैसे बात करने हैं बच्चों से। सो दिस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ आवर लाइफ। जब हम लोग कुछ घर का भी काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये करते हैं, करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब भी थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है कि कैसे करें, कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करें, राइट? अंडरस्टैंड द प्रोफाइल एंड मैच इट विथ योर स्किल्स। जो प्रोफाइल है उसको समझिए और अपने स्किल सेट के साथ, अपने स्ट्रेंथ एरिया के साथ, आपने जो सीखा है उसके साथ उसको लिंक कीजिए। सपोज यू आर गोइंग टू appear for an interview for a job of a teacher. So tell them that you are good in communication, you can give good presentation, your marks are good. So ये linking of skills are very very important. Start with your strongest asset. चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे कहीं पे आपने ट्रेनिंग लिया हो, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वहां से शुरू कीजिए. So that will give you a lot of confidence. That will give you a lot of confidence, right? That's very very important. And take care of your non-verbal communication. अब बात करते करते है ना, हम लोग अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भूल जाते कि हाउ आई एम मूविंग माई हैंड, मैं कैसे बैठी हुई हूँ, मेरे बाल कैसे है, मैं किसको देख रही हूँ, मैं क्या टेंशन में ऐसे हाथ, मतलब एम आई रबिंग माई हैंड्स, पाम ऑफ माई हैंड्स, व्हाट एम आई डूइंग, उस पे ध्यान दीजिए और वो सारा कुछ होगा. एवरीथिंग विल हैपन व्हेन वी टेक केयर ऑफ पॉइंट नंबर 2, दैट इज व्हेन वी आर वेल प्रिपेयर्ड. जब हम लोग कुछ भी काम करने जाते हैं विथ आवर होमवर्क्स बीइंग डन प्रॉपर्ली. ठीक है? और टिप नंबर 2 यहाँ पे क्या है? डोंट फेक. ठीक है? झूठ मत बोलो. जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं है. डोंट फेक. कोई भी झूठ का सहारा मत लो. बिकॉज इफ यू टेक झूठ का सहारा, what will happen? People will understand it in the long run. People will understand it in the long run. ठीक है? So you got to get things clear. जो है, मतलब अगर मैं X हूं तो मैं X ही हूं. I will not try to portray myself as Y. If I'm X, I'm X. I'll not try to portray myself as Y. मैं जो नहीं हूं वो मैं नहीं हूं. So that is the tip. Do not fake. Keep in mind, how to introduce yourself professionally. Make your professional introduction relevant. इधर उधर की बातें मत करो. Irrelevant बातें no. Say what about your say what your contribution is. आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या कंट्रीब्यूट किया है? आपने किसी को कभी हेल्प किया है? आप फ्रेंड्स के
प्रोजेक्ट्स में आपने हेल्प किया है, आपने स्कूल में कुछ किया है, आपने कहीं और कुछ किया है, आपके पर्सनल लाइफ में आपने कुछ किया है, टॉक अबाउट दैट, टॉक अबाउट दैट, बी ओरिजिनल, प्रिपेयर एंड बी केयरफुल व्हेन कमिंग अप विद फनी वेज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नहीं, ज्यादा कैंडिड, ज्यादा फनी होने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। व्हाई आई टेल यू, व्हाई आई टेल यू that is academic, school and college, क्या क्या हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। एकेडमिक्स लाइक स्कूल एंड कॉलेज, अदर्स इफ एनी, तो हमें बताना होगा अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में एकेडमिक्स के बारे में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कौन से स्कूल से कब बोर्ड्स क्लियर किए, कब हम लोगों ने क्लास 12 किया, कब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, कौन से कॉलेज में गए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितने मार्क्स आए, these are very very important. And others if any, like मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हो, मैंने कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया हो, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। फैमिली, बिकॉज आई एम वॉट माई फैमिली इज, मैं वही हूँ जो मेरे फैमिली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने फैमिली से एकदम अलग हूँ, कभी कभी शायद हो भी जाए, बट एक्सेप्शंस आर नेवर रूल्स, राइट। तो आई एम वॉट माई पेरेंट्स आर एंड आई मस्ट टेक प्राइड इन दैट। मेरे फैमिली मेरा प्राइड है, मेरा गुरूर है। तो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फैमिली। कभी कभी ये होता है ना, लोग फैमिली के बारे में बोलते बोलते इतना इमोशनली ओवरलोडेड हो जाते हैं कि बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। नहीं, वो ठीक नहीं है, राइट। थोड़ा सा कि I come from a nuclear family, I come from a joint family, my father is a businessman, my mother is a homemaker, my mother is a teacher, my father is a farmer, so on and so forth. We have a family business, both my parents are are into service, my father is a retired person, whatever, एक या दो लाइन, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो मैंने अपने पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किया है, अगर किया है, अगर नहीं किया है तो ठीक, इट्स ओके। सबके पास सब कुछ शायद नहीं भी हो, लेकिन ये एक लिस्ट है जो अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, जो लोग स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग कॉलेज के हैं शायद उनके लिए ये पॉसिबल हो, उनके लिए ये रेलिवेंट हो। तो आप ये देख सकते हैं, राइट। हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। Hobbies and extracurricular activities are very important because we are known by our hobbies. Hobbies tells us about the person we are. Like if I am a sportsman, मुझे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता है। That means what? That means it is something which gives the other person an idea about my physical fitness. If I'm physically fit, I'm mentally also fit. I'm more energetic than a person who doesn't move. जो सारा दिन टीवी में सोफे में बैठ के आलू चिप्स खाता है और टीवी देखता है। I'm much much fitter than him. मेरे से काम होगा। Achievements, या फिर मान लो I'm a singer, that is my creative skills, है ना। I like to do gardening, I'm creating, I'm close to nature. Very important in personality analysis, right? Achievements, अगर कभी मैंने कुछ अचीव किया हो तो मैं बोल सकती हूँ, अगर नहीं किया हो तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेजेस, मुझे कितने सारे लैंग्वेजेस आते हैं। अगर हो सके एक फॉरेन लैंग्वेज मुझे आता हो, बहुत अच्छा है। नहीं आता हो, छोड़ दो। मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे अपना जो लैंग्वेज है, माय मदर टंग, मुझे वो आते हैं। So Indians के पास, we always have more than one language to talk about. For non-Hindi speaking people, 90% of non-Hindi speaking people knows a little bit of Hindi. Then English is something we know, we learn over the time. And then we have our mother tongue. इससे क्या होता है, language development is a skill which shows how intelligent, how adaptable you are. Okay, so that is very important. Be alert about the company culture. जहाँ पे जाके आप बात कर रहे हो, वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा ध्यान आप रखिए, ठीक है। एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर, ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स क्या है? रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन,
स्माइल कीजिए बात करते समय, स्माइल गोज अ लॉन्ग वे. इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर्स लाइक ग्रूम्ड कैंडिडेट्स, अच्छे से ग्रूम्ड होके जाइए. इंटरव्यूअर एक्चुअली एवरीबडी लाइक्स ग्रूम्ड कैंडिडेट्स. ग्रूम्ड मीन्स यू नो अच्छे से बन ठन के जाना. अ काम माइंड होल्ड द की टू सक्सेस. अ काम माइंड, एकदम शांति से, शांति बनाइए रखिए, तो आप आराम से बैठ के शांति से अपना काम कर सकते हैं, अपना बात बोल सकते हैं. सो दिस इज अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया कन्वर्सेशन कैसे शुरू करेंगे? Okay, today's lecture is best for development of confidence. I'll do a lot of confidence building exercises. I'll try to do with you all. Not to worry. So that is all from my end for this week. I'll be seeing you again on Monday. Enjoy your Sunday tomorrow. Monday 5 o'clock. We'll be meeting here again on this Facebook live page of SKT University. Till then, keep practicing a little bit of English and do things that you like to do. Bye bye and take care.